अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अजुक सोन टॉपिक फोर लूप से मतलब तो अजकिस वीडियोस वुचो वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर लूप। पतमिस वीडियोस में वुच वर्किंग ऑफ द फोर लूप तत वुच फोर लूप क्या गो तो फोर लूप जनरल सिंटैक्स क्या तो फोर लूप कितकन काम करान विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस वर्किंग ऑफ फोर लूप in previous video. So today's our topic is properties of for loop. We can say various ways to write a for loop. How we can write the for loop differently. उसके मुख्तलिफ तरीकों by different ways कितने आप for loop लिखान तो हम क्या properties हैं आसान सो कर वो discuss या किस videos में. So our topic is for loop. For loop क्या गो यू पतमिस वीडियोस में तो जनरल सिंटैक्स ऑफ फोर लूप वुचान लिखान फॉर इनिशियलाइजेशन एंड ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेशन कंडीशन एंड अपडेट then body of the loop. In previous video we have discussed this general syntax of the for loop. This is general syntax of the for loop. क्योंकि इसे for loop से नम त्रण है चाहे initialization है termination condition है या updation है. These are the optional. These three expressions are the optional. But these two end of statements, these two semicolons are mandatory. They are mandatory. चाहे लिखो इनिशियलाइजेशन यतन करो या बालक कुंजाय करो, चाहे टर्मिनेशन कंडीशन दो या न दो, चाहे अपडेट करो या न करो, या यतन करो या कटन करो अपडेट. They are optional. We can skip these three expressions. उसे अपन skip कर सकते हैं. मगर mandatory जरूरी for semicolon and semicolon. नोम जिस चीज गसन जरूरी आसन. वो there must be these two semicolons in this for loop. There must be these two termination conditions in this end of statements in this for loop. Otherwise, the for loop will show us error. Not high error. वो mandatory शी आत्मस कि नोम जिस चीज गसन आसन जरूरी. क्या initialization है कुछ नब्रत करित गुआरत करित उसे को initialization कुंती जाय करित आसमजत. तो मगर या termination condition इस थावो या न थावो कितकिन थावो that is secondary question. Update करो attend करो body में करो update कटन करो. That is different thing. They are optional. But there must be these two semicolons. अगर कहीं क्या नम जिस semicolon से जरूरी था. It is a rule. So take care while you are going to use the for loop in programming. इन साथे programming मुझे करान चु and थोड़ा ख्याल. तो let us discuss various properties of these three expressions one by one. I take care of these properties. Initialization is attributes termination condition is updates. I take care of discuss. But we will discuss these things with the help of an example program. With the help of an example program, we will discuss various properties of initialization, termination condition, and update or modify. Okay, so let's write a program. Let's write a program. Our program of leftovers, and that program will let's write a program which will print the numbers from 1 to 5. Use number करें print expected 5 done using the for loop. Okay, so let us write a program. This small program. Let's देखो ये लापट program. किसके लिखा हुआ है इसलिए ना कर. One of the most have hash include stdio.h hash include conio.h wide man int I clear screen for I equal to 1 I less than or equal to 5 I plus printf percentage
selection of I printf end of program get ch. I have written this small program which will print numbers from 1 to 5, and with the help of this program we will discuss the various properties of initialization, termination condition and updation. Now or we can say we will show different ways by writing the for loop. ये तो मुझे वारिया मुख्तलिफ तरीके for loop लिखने क्या जी क्योंकि आम तौर इन साथ ऐसे क्वेश्चन युवान एग्जामिन में तक क्या कोड आसान दिया तो अच्छे वना कि they the output of this code. During the examination, some code are given in the question papers, and we have to give the output of that code. अच्छे पे वहाँ output. अगर मैं चूँकि general syntax of for loop, अगर हम differently आसान चुके अच्छे तपन दस्ता है ये करने output produce नहीं आता error अगर मगर actually क्या सुच output करान तम सुच output produce करान different output क्या produce करान तो यूँ सच बात आंचु error तो तवशी it is important to know various ways to write a for loop. For writing a for loop लिखने की different तरीके से तिम कर लगने से पता go for I equal आपको variable integer of variable कोड में आप I declare ये तन को initialize I equal to 1 as में तो 1 अगर मैं उसे ये initialization and इसका property से बोला थी फर्स्ट property चाहिए मैं वो इस initialize इसे optional इसे off और ये था यार for example ये तो थोड़ी में की है ओके मैं पूरी आयत से खत्म अगर थोड़ी initialization तो ये तन कोड में मैं लिख के नहीं I equal to 1 go अगर initialize the value of I मैं कोड initialize value of I by 1 या तो value is 1 ओके ये जो 1 आ दूसरा value and मतलब go कि first value दूसरा initialization गई ना and but what is control directly set I less than 5 you have one gets compare with 5 ये condition is true gets till gets body of the loop execute go ये condition से true कि 1 is less than 5 okay it is true till what control देता print gets I वो print gets 1 path gets देता I gets plus ये by 2 क्या actually put already in operators plus बनावा एक ये I by 2 दे वाट देता दे gets I less than 5 क्या 2 शला पर 5 yes 2 is less than 5 print क्या कहते 2 क्या है परसेंटली I वैल्यू गैस पुट I वैल्यू 2 सो गैस प्रिंट बे खसियतनस I प्लस I by 3 गो ये रोज तो टाइम का सान वैल्यू तो ता रोज रूप चलन ये तो ता I वैल्यू 5 छु ये गैस गो मैं गैस 1 2 3 4 एंड 5 ये बन आउटपुट ठीक है जी अगर कोई ये कन पूरा ना आउटसाइड अगर कोई ये जन कर रहा है ना कोई I equal to 1 तो मैं वैल्यू है आउटपुट आई एम सिट पेइंग इन आउटपुट रिस्पेक्ट टू इन फर्क सो there is no difference whether I initialize I value या counter होना चाहिए in the body of this for loop in this for loop or before अगर मैं ये तंत्र कोड में ये चुन सकी it is right या ये तंत्र कर बस I तंत्र पकड़ इसकी कोड है and I equal to 1 मैं करते initialization as well as declaration मैं कोई value declare की integer type तो उसमें कोई initialize as start value 1 then there will be no effect on this output same output will be generated यो है output कैसे हम सीखते generate वो तब वो उनमें इस ऑप्शन है उसे तन थावा या ना थावा ओके क्योंकि मैं थोड़ी ये मतलब I equal to 1 हेडिंग डाउन खत्म ठीक I'm पाते चितायम I'm सोचना है कुछ क्या अगर मैं I equal to 1 ये तुमको मैं की मैं थोड़ी की फिर थोड़ी में की I गो मैं कोड ऑफ I वेरिएबल कोड में इनिशियलाइज I ठीक मतलब इनिशियलाइज डिक्लेयर करने वेरिएबल I मतलब इनिशियलाइजेशन करने को नहीं जाए आज तक मैं स्टार्ट किया क्योंकि लूप चासन तम साथ करने इस्तेमाल ये तनस के स्टेप्स के स्टेटमेंट्स आसान रिपीटली एग्जीक्यूट करें ताकि इस करना लूप इस्तेमाल सो ये तंते स्टार्ट करो लूप मतलब इस्तेमाल कर कुछ पॉइंट पे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट देयर मस्ट बी सम स्टार्टिंग पॉइंट कुछ स्टार्ट का पॉइंट इतने स्टार्ट करो सो क्या आसान लूप इसमें क्योंकि उस I वैल्यू इनिशियलाइज कर ये चीज I वैल्यू इंक्रीमेंट करान here we are going to increment the value of I ये चीज I वैल्यू करान इंक्रीमेंट मगर क्या चीज करान इंक्रीमेंट उस स्टार्ट से कोई वैल्यू दिवान we are not assigning any value to the I so what we are going to increment उसके कैसे इंक्रीज करान तो दिस अगर इसके लोग तो ये हाई में आ रहा दिगा इसने एग्जीक्यूट किया ये ना आउटपुट की है ये हाई में आ रहा
Because we have not initialized this value anywhere. Outside the initialize, inside. So it is mandatory to initialize this value. But Katan Karva Bakara Godai, Bakara declaration Kaki, Bakara time path, Bakara body with Bakatan Kari, Forty of Human, Terence Samus Karaba, Bakatan Kari. Magar, we have to initialize it. Take care of these things. Okay? The Iwagawa property of this initialization. The train property, I can initialize more than one variable. I can initialize more than one variable in this body. But I can just put a variable initialize. For example, अगर मैं एक z variable को I की z variable से मतलब I and j. I have initialized two variables I have declared two variables I and j of that integer. तो ये करना I equal to 1, comma j equal to 1. Take care. It is end of statement. I equal to 1, j equal to 0. Differentiate. That means I have assigned value 1, this and j means 0. Okay? इस मतलब बिल्कुल सही मतलब. बुझो. अगर मैं कर initialization, I have I to initialization, j to initialization. मगर whenever we are going to initialize more than one variable, यम साथ I को तो ज़्यादा variable करना in this for loop, we have to separate them by using a comma operator. Comma से जरूरी. अगर मैं comma थ्रो की, for example मैं थोड़ा comma की issue में error. यहाँ है मेरे error. तो जरूरी issue के बताओ comma. Take care of these things where you are going to write use these for loops. These are the different ways. ये इसे थोड़ा जनरल सेंटर का हटके थोड़ा. Go I equal to 1, j equal to 0. Go ये क्या किसको? I equal to 1, I असम क्या था 1, j equal to 0, j असम क्या था 0. मगर कैंशन से कैसा I पता चलता है कंट्रोल. I less than 5. क्या I वैल्यू जो 5? Yes. कंट्रोल वासे प्रिंट है. I गैस को 1 गैस में प्रिंट. अगर मैं इतना कार्य करूँ, फॉर एग्जांपल बकरे थोड़ा चेंज पूछूं. मेरे %d slash I and j. मैं कर I की j इसमें प्रिंट करना हूँ दोनों में. ये मैं I को प्रिंट I कैसे 1 प्रिंट ठीक. पर के j प्रिंट j क्या कैसे प्रिंट 0. वो इशू I वैल्यू इशू j कैसे 0 ये कैसे I. पर कैसे I प्लस ये वैल्यू 2 I वैल्यू बे कैसे का बीच I less than 5 क्या 2 चला पर 5 2 चला पर 5 2 प्रिंट या % पर I j I का बे I क्या कैसे प्रिंट 2 j क्या कैसे प्रिंट j बे तक 0 पर कैसे I प्लस ये वैल्यू 3. Okay, are you getting? You mean 3? I less than 5. That 3 shall not be points. Yes. 3 less than 5 condition is true. You will get a print of %d, ij, I gets 3 print, j क्या gets j is 0. Go मेरा रोज ये तो तक ये 5 condition true रोज ये तो तक रोज में ये 0 print करना. क्या है जो 0 print? तो क्या है? अर्शी इतना करना update खाली I value. We are going to increment the value of I only. We are not incrementing the value of j. We have initialized this j value by 0. Initially, we have initialized this value by 0, but we are not going to update it. Actually, update current key. As a result, the j value will remain same 0. And the value row. See, and we are updating only the value of I. Actually, खाली I value update current. Yes, I value update current है तो switch कैसा increase तो switch है 1, 2, 3, 4 and 5. Take care of these things. Go get a block property and we can initialize more than 2 variables, 1 variable. I put 0, 3, 4, but those variables, those counters must be separated by using by these comma operators. जरूरी ची इस करो तकनीस इम comma operator ची इम करो इस्तेमाल दिम थोड़ा मतलब अलग करने खातिर. And these are the some properties of this initialization. तो ऐसा कोई इसमें जरूरी है ये तो करना जो बैक कहते I equal to 1 comma j equal to 0. ये क्या करना है कि initialize. कई नॉन ऑप्शन है. मगर जरूरी चीज सेमीकोलन के साथ. नॉन सेमीकोलन चीज compulsory. These two semicolons are compulsory. So these are the properties of this initialization. Now let us discuss the properties of this test expression. मगर वो जिम property discuss. For example, I should equal to 1. j should be j का भी 3 इसका भी okay. इसका loop. इसका loop 1, 2, 3, 4 and 5. इसके loop. इसके loop working से मैं already discuss कर रहा हूँ. Which for I equal to 1, I is which 1? Good. I less than 5? Yes, I is less than 5. This is the termination condition. This is the termination. It will decide. This condition will decide whether the loop will get executed or not.
It is only this condition, is the result of only this condition, which will decide whether the control will go inside the body of the loop or not. यही condition से decide करान termination कि क्या body of the loop यह असली logic छु यह से काम करने चाहिए सा गचा execute किन सा गचने किन that will be decided only by this termination condition. तब वही शास्त्र ने test expression जामला ची termination condition कि ये loop कटन गची terminate ये कटन क्या है जरूरी छु ये कि अगर अस काम स्टार्ट कर सक एंड तक जाए गसिन तो आई हैव स्टार्टेड दिस लूप फ्रॉम 1 एट तक कर मैं आई वांट टू टर्मिनेट दिस एट 5 बट यसान कि ये गोज गसन खत्म 5 पे सो देयर मस्ट बी सम टर्मिनेशन कंडीशन अगर मैं टर्मिनेशन कंडीशन ही गस के दैट विल गो टू इनफिनाइट लूप सो गस इनफिनाइट लूप मतलब दैट इज फॉर नो यूज सो रुकनी जा चला रोजा कंटीन्यूअसली यस काम न खत्म ही गसी. What is fun? That's the maksad. Output in area. What is fun of that work? So there must be some termination condition. So this termination condition क्या है? This is optional. I can write here. I can write anywhere. This is a termination condition. This is a termination condition. And but क्या है इसको? मुझे ये सी termination condition है. Attention how we can write. Take care. बदलना है. Look for I equal to 1 back with G comma J equal to 0 comma I less than 5 comma J less than 3 comma I plus J plus. Take care. Another thing. I have put two conditions here. The condition primariness. After I less than 5, comma J less than 3. This can get initialization more than one initialization, but that must be separated by the comma. Here also, when I am going to write two conditions, there are more than two conditions. Like they must be separated by some comma. They must be separated by comma. Means comma I less than 5, comma J less than 3. And मतलब क्या होगा I less than 5, J less than 3. And मतलब क्या होगा उचू. But याद था उचू ये सारे में condition है. With that number of conditions, 4 yes, last condition I said that will be treated as a terminating condition. The compiler treats the last condition as a termination condition. Because now I am wrote termination condition is the condition can loop and gasanchu. You decide karanchi whether the loop will get executed or not. Which second loop you decide karanchu. That is has been decided by this termination condition. But in this case, well, I am going to use two or more termination conditions here. When I am going separated by a comma, the last condition is treated as a termination condition. ये चीज़ करने ट्रीट के ये गश्तन जान ये नुकसान क्या ये कम साथ गच्छे या सही and that does not affect on the output. This one, the last one, is treated as a termination condition. Different. Let's see with the example here. इसका वाइड वर्किंग का थोड़ा डिस्कस तो so that they can असल पर समझ कुछ I को ना वेरिएबल इस्तेमाल किया आपको मैं जी I असम तुम्हें 1 वैल्यू जी असम तुम्हें 0 वैल्यू ओके I तक I less than 5 का वेट क्या I से less than 5 yes I से less than ये कंडीशन से 2 comma J less than 3 क्या J से less than 3 yes क्या 0 से less than 3 should be less than 0 से less than 3 the condition से up to I से 5 welcome J less than 3 yes तेरे पास कंट्रोल करना person D selection comma I J अब चुका इसे आउट फॉर एग्जांपल इसमें आउटपुट क्या है यहाँ आउट which person D I gets a print I equal to 1 J gets a print J क्या 0 and पर कैसे कंट्रोल I plus क्या भाई 2 क्या 1 gets J plus दोनों लेगा I gets दोनों लेगा नेटनेस इंक्रीमेंट J plus J क्या 0 ये J से 0 क्या भाई 1 क्या 0 plus 1 gets 1 plus करांची इंक्रीज by 1 I तक क्या कंट्रोल ये तक J less than 3 take care J less than 3 J से less than 3 yes
J should less than 3. Catch 1 should condition true. Be what it percent I J. I to J gets point. I catch 2, J catch 1. Be catch plus. I plus plus. You can 3. J plus plus. You can 2. Be what it J less than 3. Catch J less than 3. So you put your condition chart. You can J less than 3. Yes, J is less than 3. Catch 2 should less than 3. Be what it I to J gets point. Put 3 to 2 gets print. Be I plus plus. You can 4. J plus plus. You can 3. J less than 3. 3 is less than 3? No. Okay, 3 should less than 3. Can. Control will go here. It will jump. Control will reach here. Outside the body of the loop. Program is the end of program. End of. हालांकि तय वुचो यतनस ये कंडीशन इज ट्रू विनति क्या है आई वैल्यू वाज 4 है सुच लेस देन 5 एज पर यस वनान छी कंडीशन इज ट्रू गस चलो तेरे को लूप चलो मगर ये कंडीशन गई फॉल्स j लेस देन 3 दैट इज द रीजन द कंट्रोल गोज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप सो गो बॉडी ने तो सोच द एंड ऑफ द प्रोग्राम गो आइटम पर में ये फिक्री यम साथ मल्टीपल कंडीशंस आसन यतन द लास्ट कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ टर्मिनेटिंग कंडीशन यस पटिंग कंडीशन छे सोय छे यवान करने एज ट्रीट एज अ terminating condition by the compiler and you know what is they are just the statements tim chasan tam and rest of their condition rest of whatsoever is written here are treated as the general statements they are treated as only simply as a statement tim nom chi asan state but this one law agar maine bya khatar k less than 5 comma 3 tel ga si condition mein treat as a termination condition go your last condition se karan decide ki loop chale tinna yem sat more than one yetna asan yem conditions asan this is the property of this hope ki tayas samajh yem se ke working of this yes the in expression che termination condition che and kya che matlab thoda asan hota itna samajh third one us yekin ko istemal less than ya less than fitness these are the relational operators जरूरी छुन कि बकर एक्टस इस्तेमाल खाली रिलेशनल ऑपरेटर्स आई कैन यूज एनीथिंग विच सब है काउंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर विच यह है इस्तेमाल थे टेक किया भले फॉर i इक्वल टू 1 i इक्वल टू 5 i प्लस प्लस विच गो मेलो के प्लस इक्वल दैट मींस इट विल चेक द इक्वालिटी आई को 1 ये तान ये 5 बराबर गछ गो यतन को लेस जरूरी छुन के बस आम लखन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन उस को काउंट ऑपरेटर लिखे वी कैन आल्सो इंक्लूड हियर ए लॉजिकल ऑपरेटर्स साथ लखन इस्तेमाल छ करन तम साथ क्या छ अमुक असर पारन टेक केयर थियो फॉर एग्जांपल i इक्वल टू 1 कमा बकल j इक्वल टू 5 j इक्वल टू 0 j छ में 0 और इक्वल ठीक I less than 5 and j less than 3 I less than 2 and j less than 3 I plus plus j plus plus you for me plus which initialize yetun ko I have used they here the logical and क्योंकि logical and छ pormut logical and asan yasan asit tam sat output asan true yem sa sare input yem sa sari tam ye truth table of logical and paran chu yem sa sari input true asan tam yo sat cha output asan true otherwise asan output 0 to yeten kya cha ase I gone ka check I value shme put 1 to j shme put 0 okay I less than 2 kya I value less than 2 yes condition is and ye true guys tek sa ka ji job de and j less than 3 क्या j से less than 3 yes क्या 0 to 3 पर लागूट 1 to 2 वो दोषे कंडीशन से 2 पुनः निकाल I to j I and j में देखो 1 to 0 कैसे print 1 to 0 कैसे print पाठ I plus plus j plus वो ये by 2 ये by 1 बे वाट है plus I less than 2 क्या 2 से लागूट 2 no क्या 2 से लागूट 2 क्या 2 से बराबर 2 वो ये कंडीशन गई इवैल्यूएट false यदि evaluate false गई फर्स्ट कंडीशन जब evaluate false no need to check the second condition तेल जरूरत दोयम कंडीशन चेक करन क्या लॉजिकल एंडस मन गसन आसन सारे कंडीशन ट्रू तेली छ रिजल्ट ट्रू ये आख कंडीशन गई false अगर बाकी सारे ट्रू ति गसन सुच false तवय छ जरूरत क्या ब्रोन गसन के तवय छ कंपाइल चेक कर रेस्ट ऑफ द
condition is check करें. Go I value go with false and control will go outside the loop. Print गया इसमें end of program. Go end of program. Go अतन को मैं खाली print 1 to 0. हालांकि j was less than 5 हुई. J value was 3 for कम. ये was 10. ये condition is true हुई. ये गई false. मगर ये was true. मगर तो it go exit loop. Control go outside of the body of the loop. Go that means अगर मैं तो को मैं or इस्तेमाल की हूँ. वो को मैं or operator logical or. I have used here the logical or. Logical or से क्या डिफरेंस है क्यों? Which I equal to 2, I shall less than 2? No. क्या 2 चुन 2 बराबर क्या? और तेरे के पकड़ अगर बॉडी के फॉल्स पर आप मुझसे देम तो जरूरी हाँ देना चाहिए. J less than 3. J is less than 3, 1 is less than 3. वो देम कंडीशन है true. बॉडी से फॉल्स देम क्या है? R is true. Control will go here. Then क्या है R is मुझे अगर अकेले कंडीशन की true आसे बाकी rest of the आसन false तो whole result इनको आसान true. क्योंकि ये कंडीशन बॉडी से false देम से true. That means result से true. ये true से क्या that loop execute. ये कैसे नेम print %t ij. That means ये कैसे नेम print इतने दे 2 and 1. 2 and 1. बे कैसे नेम I plus plus क्या बनी 3. J plus plus क्या बनी 2. Be what? I less than 2. 3 shall not put to us? No. What is a false? Pass what is or J less than 3. 2 shall not put 3 as? Yes, conditions are true. Percentage ij. Go you bind 3, you bind 2. You want it as I plus plus, you bind 4, you bind J plus plus, you bind 3. Big. I less than 2. 4 shall 2 as not put no. What is a false? But then J less than 3. 3 shall not put 3 as no. Go done with it and such a control number. Go this your RS and skip on as it. That means we can use logical operators here. We can use either expression क्या है कुछ एटनस लिखित एटनस वो सभी देखें ये एक कुछ सब हमारे एटनस थे जो this is the properties of this second condition. What is the third condition? Third condition है उसे ना कुछ में उनसे option में मतलब बैठे थे I plus plus comma J plus plus ये टर्म थे उसमें करिए ये तो उसमें खरी को I can use this right I can write this update expression at here also वह के तरह की इस्तेमाल I plus plus J plus plus तब वो ऑप्शन पर लिखा ये तो न लिखा नो मैटर आउटपुट में पेने फर्क क्या है मैंने कितना आउटपुट में पेने फर्क क्या या इसमें जरूरी बने कि I पर बने कि I equal to I plus 2 I can also write this या J equal to J into 2 वह क्या के लिखते I can write an expression as well. It is not mandatory that by that I can write only this I plus plus and J plus plus. I can write expression as well. By expression that means like by J equal to J divide 2. by कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ या J equal to कैसा अगर expression by 2 into 2 कुछ भी लिख सकता हूँ. वो जरूरी चुनिए कि भले I plus plus या Hope कि तयास आमद समझ various ways of writing their for loop, different ways in for loop. That means hope कि तयास आमद ये समझ तो confusion gets in future. This is all about the properties of this for loop. So for loop and the properties है तो that is done now. And inshallah in next program we will use the for loop and will generate the multiple table of any number. Multiple table करो कोई number. Inshallah that we will discuss it in the next video. Till next video, take care. Bye bye.